and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My lovely educators, this is Meenakshi Narula, and today we shall discuss the three subject integration approaches. The ways in which we will be able to teach different subjects, we will be able to integrate different subjects and make our students clear their concepts, clear their doubt, and let them connect their learning with the real life. So my lovely educators, as you can see here on the screen, we shall be talking about the three approaches for subject integration: multidisciplinary approach, interdisciplinary approach, and transdisciplinary approach. These are the three approaches. And now what is a discipline? I have already told you in my previous video when we were comparing and contrasting different kinds of multidisciplinary projects. They were there and we were analyzing them. My lovely educators, disciplines are the different subjects that our students, they are studying, that are part of their curriculum, right? So my dear educators, when we teach different subjects to the students, means the different disciplines they are dealing with. And here there are three approaches based on how do we deliver any content through different disciplines, through different subjects. And these three approaches are multidisciplinary, interdisciplinary, and transdisciplinary. So डियर टीचर्स, हम तीन तरह की अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे: मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी। जैसे कि पिक्चर्स से भी वेरी वेरी क्लियर है, मल्टी डिसिप्लिनरी आपको यहाँ रेनबो कलर्स में अलग अलग कलर्स में अलग अलग डिसिप्लिन सिखाए गए हैं, सब्जेक्ट सिखाए गए हैं कि किस तरीके से हम स्टैंड अलोन एंटिटीज में, अलग अलग साइलोज में, अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बच्चों को सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी में क्या हो रहा है कि सारे सब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, right? So they are intersecting with each other, and then we are teaching, they are relating with each other. And in transdisciplinary, there is something new that is appearing, like we integrate different subjects and there is something new that is coming up. So हम एक नई चीज इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे. You have to stay tuned. I have got so many things to discuss with you in detail. Let us first talk about multidisciplinary approach. As you can see here on the screen, I have written in detail and the image is there as well. In a multidisciplinary approach, different subjects would teach about the topic of, like we are giving an example today, we are taking an example, like suppose we are taking example of food today. Okay, so in multidisciplinary approach, different subjects, they would teach about the topic of food independently. And a subject would provide its own perspective on the topic, right? हम फूड के बारे में बात कर रहे हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, मैथ्स है, सोशल साइंसेस है, तो हर एक सब्जेक्ट अपना पर्सपेक्टिव दे रहा है फूड के बारे में। कैसे? एक एग्जांपल के द्वारा समझ रहे हैं कि in a multidisciplinary approach to the topic of the food in science, the science teacher would teach about the chemical composition of the food. Suppose I'm a science teacher and in my class I talk about the different components of the food, right? The chemical composition of the food, right? We talk about carbohydrates, vitamins, and all. We talk about all those things. And then how body breaks down the food for energy. I'm talking about all these things. I'm talking about digestion because it's related to nutrition, right? And the math teacher in his or her class would teach about how to measure or analyze nutrition data. I mean, that is a standalone activity. उसका मैं as a science teacher क्या करा रही हूँ, क्या नहीं करा रही हूँ, उससे कोई लेना देना नहीं है, राइट? वो अपने हिसाब से अपना पढ़ा रहा है, मैं अपने हिसाब से अपना पढ़ा रही हूँ, हमारा आपस में कोई कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, ठीक है? And the next one, let me give you a better clarity on the picture. The health teacher, maybe the physical education teacher, would teach about the benefits of a balanced diet. फिजिकल एजुकेशन की क्लास में जाते हैं, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, दैट इज HPE, और मे फिटनेस क्लासेस, योगा क्लासेस, जो भी स्पोर्ट्स टीचर PTI है, वो उनको बारे में बताता है कि आपको एक बैलेंस डाइट लेना है, मिल्क लेना है, यू ऑल आर ग्रोइंग, विटामिन जरूरी है, ये जरूरी है। आई मीन उसको नहीं पता साइंस में क्या पढ़ाया जा रहा है, मैथ्स में क्या पढ़ाया जा रहा है, वो अपनी तरफ से बच्चों को फिट रहने के लिए एडवाइस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही सजेस्टिंग। सो मतलब बच्चे पढ़ तो फूड के बारे में रहे हैं, उसके बेनिफिट के बारे में रहे हैं, उसको कैसे मेजर करना है, कैसे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू देखनी है, क्या है, वो सब अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग में भी टाइम पर पढ़ रहे हैं। हो सकता है मैं अप्रैल में करा रही हूँ, मैथ्स का टीचर बाद में कभी अगस्त में करा रहा है,
हेल्थ एंड वेलनेस वाला टीचर जो है, स्पोर्ट्स वाला टीचर, वो रेगुलरली बच्चों को जो भी अपडेट कर रहा है, तो हमारा सबका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है. सो व्हाटएवर वी आर टीचिंग, एवरीथिंग इज बीइंग taught in silos at different times to our students. So maybe they are not able to connect the learning with each other. अप्रैल में कोई चीज पढ़ी थी, उसके बाद हमने कोई और नया चैप्टर सिखा दिया, फिर और बता दिया साइंस में, मैथ्स के टीचर ने बाद में पढ़ाया है, तो बच्चे का उसके साथ लिंक ही कोई बन नहीं रहा है. राइट, आई होप यू गॉट इट. सो दिस इज अ काइंड ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, कि हम पढ़ा तो रहे हैं पर उसका आपस में वो तालमेल, इंटीग्रेशन उस तरीके से नहीं है. बट हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सारे टॉपिक्स उसमें कवर जरूर कर दें पूरे साल में, थ्रू आउट. जो भी हमारे 220 वर्किंग डे होते हैं, उस 220 वर्किंग डे में कभी ना कभी ये चीज करा दें, पर उसका कोई इंटीग्रेशन नहीं है. दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. पर टॉपिक हम जरूर पढ़ा रहे हैं, उसमें पूरा कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए हो सकता है कोई कर भी रहा हो, बट वो जो करते हैं वो कैसे करते हैं. नेक्स्ट अप्रोच है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. अगर कहीं पर हम कोई स्कूल में जब सोचते हैं कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हम सेम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो क्यों ना हम आपस में कोलैबोरेट कर लें. इफ आई टॉक टू एज अ साइंस टीचर, आई टॉक टू माय मैथमेटिक्स टीचर, आई टॉक टू माय स्पोर्ट्स टीचर, like I'm going to take up this subject in my class, I'm going to take this topic in my class, I'm going to talk about food, its components. Are you also talking about how to measure the nutrition value? Are you going to talk about how it is beneficial for you to take balanced diet if you want to do good in sports, if you want to remain healthy and all? Can we all three collaborate? So that is interdisciplinary approach. So I'll give you one example, my lovely educators. For example, the science teacher, I mean, I'm talking about myself as a science teacher, I would teach about the chemical composition of the food. And the health and teacher would teach about like how these components would be helpful for me. If I'll be taking carbohydrate, I'll be getting more energy. If I'll be taking vitamins, that will help me to protect myself from the diseases and all. So this is how, I mean, he is also teaching the same thing at the same time. I mean, whatever he is teaching, he is supplementing whatever I have taught in the class. And sorry, the economics or maybe the social science teacher will be talking about the economic impacts of the food production and the distribution. Like this is how the food is being produced, इसका impact क्या आ रहा है, distribute क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, and together we all would create a more comprehensive understanding of the topic, relationship between food, health, and economics. I hope you got it now. This is called interdisciplinary approach. करते हम अगर इसी चीज को हम साइलोज में करते हैं, दैट इज मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच. इसी चीज को आपस में कोलैबोरेट करते हैं, दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. इसके ऊपर भी कुछ और है, इसके बियॉन्ड भी कुछ है, that is transdisciplinary approach. And my dear educators, we're going to talk about transdisciplinary approach. Now, what is a transdisciplinary approach? When different subjects, they would work together to create a holistic understanding of the topic, going beyond the traditional boundaries of each subject. Interdisciplinary में जब हमने subjects को आपस में सी इंटरसेक्ट किया, कोलैबोरेट किया, एक साथ पढ़ाया, तो उसमें भी हर सब्जेक्ट का एक अलग इम्पैक्ट है, जो कि एक साथ मिलकर एक अंडरस्टैंडिंग जो कॉन्सेप्ट की है वो बेटर जरूर होती है. बट इफ वी वांट टू ब्रिंग इट टू द ट्रांस डिसिप्लिनरी लेवल, कि वो जो उसकी बाउंड्रीज है उसके हटके उसका इम्पैक्ट कुछ अलग हो, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक गोइंग बियॉन्ड ट्रेडिशनल बाउंड्रीज ऑफ ईच सब्जेक्ट. ये कैसे होगा? आई विल टीच यू थ्रू वन एग्जांपल. My dear educators, suppose I am teaching, as I've already said, I, as a science teacher, would teach about the chemical composition of the food. And the physical education or the health teacher or the PTI would talk about the benefits of the balanced diet at the same time, would be supplementing my teaching. And the social sciences or the economics teacher would talk about sustainable food production methods. Right? Now, when the same thing is done in silos at different timings, that is multidisciplinary approach. When we are collaborating, that is interdisciplinary approach. And we are giving a comprehensive view or maybe understanding of the topic. Now see, when all the things are being done and together we're working collaboratively, हमारा objective क्या है? Concept की clarity नहीं only, not only the clarity of the concept, but also relating the same with the environmental sustainability, promoting health and
environment sustainability. So this approach requires integrating knowledge from different subjects and applying in the real world situation. जब बच्चा यहाँ लोकल लेवल किताबों को सिर्फ छोड़कर जो उसमें पढ़ा है, जो उसमें समझा है, वो ग्लोबली और उसके बारे में सोचता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, कि जो मैंने सोचा है फूड का ये कॉम्पोजिशन है, ऐसे प्रोडक्शन होता है, इसके ऐसे बेनिफिट्स है, किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है. द चाइल्ड टॉक्स अबाउट जीरो हंगर, द चाइल्ड टॉक्स अबाउट food production, responsible consumption and production. The child talks about no poverty. वहां तक जब उसको लेकर आता है, that is transdisciplinary approach. So this is what we're going to teach our students, and you have to stay tuned if you want to know more about such interesting tips. And in the next video, I'll be sharing with you one more example for a better understanding. Thank you. Have a nice day.